May problema tayo kay Tanggol. Kapag ako naging mayor, puputulin ko ang daloy ng droga dito sa Maynila. Mas gusto niyang tulungan ang mga tao sa Maynila kaysa tulungan tayo sa ating mga negosyo. Pag po tayo ay nanalo, sisimulan ko ang pag-aayos sa City Hall. Walang gagawing matino yan. Tatanggalin ko lahat ng skaluwag! At ikaw, ang uunahin ko! Para dito pa lang, tatapusin ka! Sige, putok mo! Pag nanalo si Tanggol ng eleksyon na to, gaganti siya sa akin. Kayo ang pumatay sa kapatid ko. Dahil sa pagpatay ko kay David, At hindi ko kayo mapapatawad. I can't let that happen. Kapag ako nanalo, pinapangako ko sa inyo na hindi na kayo makakabalik sa munisipyo! Hayop ka! Sinira mong buhay ko. Dinamay mo pati pamilya ko! Stop mo! Hayop ka! Erika, nakabili na ako. Ito, 3. Nakabili na ako 3. Bakit ba ang tagal-tagal mo? Kanina pa ako kabang ka ba dito? Ano? Anong resulta? Ha? Ano to, Erika? Ano ibig sabihin nito? 2 linya, Santi. Positive. Buntis ako, Santino. Ano? Hindi. Erika, baka mali lang yung resulta. Subukan mo kayo Hindi, gamitin yung iba. hindi. Tatlo na yung ginamit ko lahat. Positive. Erika, baka expired lang itong nagamit natin. O kaya baka mali yung pagkakagamit mo. Anong expired? Ha? 3 na nga eh. Erika, sa ating dalawa, ikaw ang mas maraming karanasan. Sigurado ko bang... Ano? Ano? Sige, tuloy mo yung sasabihin mo. Ganyan pala yung tingin mo sa akin. Ha? Sa umpisa, kunyari may feelings ka. Tapos pag nakuha mo na yung gusto mo sa akin, tapos may hindi ka inaasahan na mangyari, out ka na doon? Mandumi na ako bigla? Alam mo, men really are trash! Erika, sandali. Erika! Erika, sandali lang! Ang gagaling! Ano? Hindi na kayo nagbago? Bakit hindi nyo patapusin to? Magpatayan na kayo! Olivia, anak, buti dumating ka na. Papa, alam mo ba, nakamuntik mamatay si Mama dahil sa anak mong si Ramon, sa apo mong si Tanggol, at yung babaeng yan, yung Marites na yan ang bumaril sa Mama! Hindi mahal na kita! Tama na, Olivia! Ano ka? Tama na! Tama na!
Ikaw, hayop ka! Wala kang kwentang tao! Isa kang hambog! Tamad! Wala kang ambisyon! Kung wala ang mama, wala ka! Kung hindi sa pagsisikap ng mama, hindi ka mauupo sa pwesto. Kahit na isa sa inyo, walang uupo sa pwesto! Mana ka nga sa nanay mo. Ang ginawa ng nanay mo, ang panluloko sa akin, ang pagpatol kay Julio. Pareho kayong walang abilidad eh. Pareho kayong walang utak. Ginagamit niyo lalaki para pakinabangan ninyo. Ah, ganon eh, ikaw! Ilang anak na ba sa labas ang meron ka? Ayop kang matanda ka! Mo kong hawakan! Ate, tama na ha? Kapahal! You cause so much problems with our family. Huwag mo akong pigilan! This is not the right place, Huwag the mo right akong time. pigilan! Please! Huwag dito, ha? Gusto mo? Ibuko ko lahat ng nalalaman ko tungkol sa pamilyang to! Ha? Ngayon na! Hayop ka! Pinatay mo ang anak ko! Tama na! Hayop ka! Ano? Kinakaya mo lang ako? Bakit? Dahil babae lang ako? At ikaw, paano kung lalaki? Lalambingin mo? What? How about that? Livia! Binabalaan kita. Is Tita talking about, Ma? Eh, alam na naman ng buong pamilya to eh. Di ibubulgar ko na. What do you say, little brother? Huwag kang makinig sa kanya. Come out of the closet! Lumantad ka na! Ipokrito! Dito ko yung sinasabi niya. Yep. Ay, walang katotohanan lahat yan. You heard it Huwag kayong right! makinig. Ang mayor nyo, etong makisig, matipuno, at magaling na mayor nyo ay may pusong babae. Ate Olivia! Olivia! Huwag kayong maniniwala sa pinagsasabi niya. Tauhan nito, bata pa lang to. May sakit si ate. Pasensya niyo. Pero Pasensya niyo. bago namin inilihim namin. Hindi namin pinaalam sa tao dahil baka masira ang reputasyon ng pamilya Guerrero. Ano? Ang isang makapangyarihan, babaerong politiko, si Don Gustavo, ay may anak na binabae. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Hindi totoo sinasabi niya. Pasensya na kayo. May sakit si ate. May sakit si ate. Olivia, tumigil ka na. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Hindi. Hindi ba para maigarahe mo yung babae mo sa bahay natin, ipinaako mo kay Roberto ang anak ninyo? Ano? Oo! Hindi. Yan si Miguelito, ang anak ni Don Gustavo. At ang pokpok na jacking yan! Nakita niyo na yung kasinungalingan. Pasensya na kayo. Pasensya na kayo. sa sinasabi niya. Ate, halika na. Sinasabi niya lang lahat para lang manalo siya bilang vice mayor. Kasi alam niya talo na siya. Ha? Hindi. Kahit na anong sabihin ninyo, kahit na anong pagtatakip ang gawin ninyo, aalingasaw pa rin ang baho ng pamilya ninyo! Olivia, tama na. Tama na. Tumigil ka! Pukpuk ka! Sobra ka na! O, tingnan nyo. Kung sa boxing hindi manalo sa Miguelito, sa eleksyon pa kaya? Sige, Tanggol! Nakakapos sa Miguelito! Suko, tigilan nyo na yan! Diyos ko! Tigilan nyo na yan! Saka pa! Tigilan nyo na yan!
Miguelito! Miguelito! Tita ka! Ano ka nanay mo? Okay siya. Aresto niyo yung mga yan. Inugulo nila ang eleksyon. Wala kayong karapatan. Ang mga gerero ang nagsimula ng lahat ng ito. Hindi totoo yan. Sir, pag hindi kayo tumigil, mapipilitan kaming huliin kayo lahat. Sila ang huliin nyo. Yan yung mga squatter na yan, no? Jackie, tama na. Huwag na natin palakin pa ang gulo. Hindi kami nagpisa ng gulo na yan. Allow us to vote. It's our right. We need to exercise our rights. Mayor, pasensya na po. Pwede na po kayong bumoto, pero sasamahan po kayo ng mga pasyalis namin para hindi na po kayo magkagulo. Sige. Sa buti yan. Reyes! Ayun na! Ayun na! Sige! Kumain sila! Miguelito! Tanggol! Tanggol! Tanggol, anak! Kamusta ka? Tarantado talaga yung mga yan! Pak Alfredo, kamusta ko kayo? Ayos na ako. Bakit kasi dito pa kayo nag-aaway-aaway kung kailan election? Baka tayo ma-technical. Tama na yan, tama na yan. Taka na. Bumoto na tayo. Baka may pahuli pa tayo ng polis. Bilis! Tara. Okay, I'm okay. Olivia! Olivia! Kumusta na? Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba, anak? Anak, pasensya na sa nangyari sa iyong nanay. Kaya hindi ko yun ang gustong mangyari. Kaya lang, kinidap niya ang nanay ni Marites. Kaya ayun, natural, susugod sila Ramon para iligtas siya. Kailangan managot sa akin yung apo mong si Tanggol, si Ramon. Isama mo na rin yung Matilde na yan at lalong-lalo na si Marites. Kaya nga humihingi ako ng dispensa, anak. Dispensa? Ganun lang ba yun? Kamuntik na akong wala ng mama. Siya lang ang meron ako. Hindi, anak. Hindi, anak. Nandito pa rin ako. Tatay mo. Tatay, sana kung nagpakatatay ka noon pa. Hindi sana ako mapupunta kay Gustavo. Hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Olivia! Olive!
अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने लगे हैं कि ये बहुत ही जो खूबसूरत बात है जो कि कहीं रोडों पे जो सीटें बनाई जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कि यहाँ पर अक्सर जो सीटें और बैठने की जगह बड़ी सीटिंग बनाई जाती है। उसमें यह है कि आप कहीं भी टेबल हो, कहीं भी चेयर लगाई जाती है, उस से बैठने के सेटअप बनाए जाते हैं। तो उससे तो ये एक नेकी का काम हो जाता है। दूसरा, जो बंदा आपको दुआएं देता है कि किसी ने ये अच्छा और नेकी काम किया है कि यार किसी रास्ते में किसी भी जगह पे बैठने की जगह बनाई है, क्योंकि कहीं कोई बंदा अक्सर थका हुआ होता है, कोई वर्जिश करता है, कोई वॉक करके आ जाके बैठ जाता है, तो उसमें उस बंदे को बैठने की जो सहूलत मुहैया होती है। इसमें देखें कि ये जो टेबल है, एक ये पत्थर की बनाई गई है, ऊपर से भी पत्थर लगाया गया है, इनके ऊपर ये काबले लगाए गए हैं जिसको हम नट कहते हैं, वो लगाए गए हैं। ये बहुत ही जो कि वज़नी है, पत्थर है सारा। उसके बाद आए इसके जो जोड़ लगे हुए हैं वो भी पत्थर के नट लगे हुए हैं। उसके बाद जो कि यहाँ पर जो ये भाई बैठे हुए हैं, कुछ 4-5 टेबल लगी हुए हैं, क्योंकि अक्सर ये रोड है, मेन रोड के ऊपर जो कि बंदा कोई मज़दूर या कोई परदेसी कोई भी बंदा आता है तो आके इधर बैठ सकता है और लेट भी सकता है। इधर कोई किस्म की रोकथाम नहीं है, क्योंकि ये जो टेबल्स लगाई गई हैं जो आल टू आल सोसाइटी है या कोई चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बैठने की मुहैया करते हैं, क्योंकि इधर आके बंदा बैठ सकता है, रेस्ट कर सकता है। किसी भी घर से भी गर्मी लग रही है, लाइट जल गई है, तो बाहर आके पार्क में टेबलों के ऊपर बंदा बैठ सकता है। क्योंकि अब जो काम है, अगर अब लड़का एक मज़दूर आदमी है तो मज़दूरी करता है, तो भी 8 से लेकर 5 तक 1 घंटा रेस्ट होता है या 1 बजे यहाँ पर आके वो रोटी खा सकता है। उसके बाद जब घर जाता है वो थक जाता है रास्ते में, तो रास्ता बहुत दूर है, तो यहाँ पर आके एक टेबल पे बैठ सकता है, 2 मिनट सुकून कर सकता है, इसके ऊपर रोटी खा सकता है। दूसरी बात, अगर कोई बंदा फैमिली है, कहीं लोकेशन गलत आ गई, आपको कहीं भी मिलने के जाते हो या कहीं भी गेस्ट बन के जाते हो, वहाँ पर आपको एक लोकेशन देती है, लोकेशन गलत होती है भी, उसको आप बता सकते हो हम ये उधर आके बैठ सकते सुकून के साथ। उस पर टेबल पे बैठे हो तो उसको बोलो भी मैं टेबल पे बैठा हूँ, या किसी किस्म भी उधर लोकेशन गलत हो गई, कोई भी सिस्टम हो गया, तो आप उधर बैठ सकते हो, कोई भी बात कर सकते हो इस पे, ठीक है। तो उसमें जो कि काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि बंदे को सहूलत मुहैया होती हैं, क्योंकि बैठना भी एक किस्म के बैठने की जगह चाहिए। तो नीचे अगर कोई घास लगा हुआ है उस पर कीड़ियाँ होती हैं या कीड़े होते हैं या कोई मच्छर होते हैं कि वो बंदा सुकून के साथ नहीं बैठ सकता। और ये अक्सर में जो कि कोनों में टेबलें लगाई हुई हैं कि वो देखें जो कि कोने में फैमिलीज़ बैठ सकते हैं, कपल बैठ सकते हैं, बच्चे बैठ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो कि हैं आपको सहूलत मुहैया करती है, जो कि गवर्नमेंट होगी, जैसा कि गवर्नमेंट जो कि सरकारी इरादे होते हैं, आपको जो कि पार्कों में स्विमिंग पूल हर चीज़ जो वहाँ पर टेबलें लगी होती हैं आपको सहूलत मुहैया करती हैं। आइए आपको दिखाएं कि मैं एक टेबल की बात कर रहा हूँ जो कि काफ़ी सारी बहुत खूबसूरत लगी हुई है। इस पर कम से कम 5 फट्टे लगे हुए हैं, नीचे सीटें लगी हुई हैं जो कि इसमें 3 या 4 बंदे सुकून के साथ बैठ जाते हैं, जिस पे लेट भी सकता है। जैसे बंदा ये लेटा हुआ है, ऐसे बंदा आप लेट भी सकते हो, आप सो भी सकते हो नीचे, ठीक है। आप सब यहाँ पर अलाउ है, क्योंकि अगर आप अकेले हो रहे हो, बोर हो रहे हो घर में, तो बाहर आ सकते हो, बाहर गपशप कर सकते हो दोस्तों के साथ। तो ये कि बहुत ही मजबूत बनाई गई है, ये देखें आप खुद इस पर बैठ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद सुकून के साथ जो कि पार्क का माहौल, पार्क का व्यू और पार्क की हर चीज़ देख सकते हो यहाँ पर बैठ के। और उसके बाद क्योंकि जो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि अगर आप बैठ नहीं सकते कहीं, तो आप नीचे बैठ सकते हो, कि जो नरम जो घास लगा हुआ है, नरम जो कि घास है, नरम बैठ के आप बात कर सकते हो, नीचे भी सुकून है। लेकिन अक्सर यहाँ पर जो बारिश की वजह से कीड़ियाँ आती हैं, कीड़ियाँ जो कि आपको काटती हैं, आपको दाने निकल जाते हैं, एलर्जी हो जाती है कीड़ियों से, इस वजह से बंदा करेंगे स्पेशली उन्होंने ये टेबलें बनाई हैं, क्योंकि यहाँ पर टेबल के साथ सुकून के साथ बैठे हैं, ना कोई कीड़ा, ना कोई बिच्छू, ना कोई किसा कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि इंसान को काटते हैं तो वो निशान बन जाते हैं, रोड़ा या एलर्जी होती है किसी किस्म के, जहरीला कीड़ा होता है। तो इसलिए कहने लगा हूँ कि बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है यहाँ पर टेबलें, जो कि आवाम के लिए बहुत ही सहूलतमंद चीज़ें बनाई गई हैं ये चीज़ें। तो उसके बाद जो आवाम जो इनका फ़ायदा उठाती है, उनके पास जो कि आवाम है
कि यहाँ पर हर किस्म की सहूलत है। यहाँ पर वाशरूम और हर चीज़ों की सहूलत है कि हर किस्म की यहाँ टेबल। ये देखें कि यहाँ पर बंदा आके सो भी सकता है। अभी दिखाया था आदमी यहाँ पर लेटा हुआ था, सो हुआ था। ये देखें कि ये देखें डिज़ाइन देख लें आप, बहुत ही खूबसूरत प्यारा लग रहा है। ठीक है, तो ये टेबल उठा के आगे रख सकते हो, आगे पीछे रख सकते हो। ये टेबल आगे पीछे कहीं भी रख सकते हो, उसके आगे पीछे रख के सो जा सकता है। वरना 2-3 बैठ के फैमिली बैठ सकती है इसके साथ, जो कि बच्चे भी बैठ सकते हैं, बच्चे भी खेल सकते हैं इनके साथ। तो ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, हमेशा दुआ में याद रखना।